At least 56 people were killed and dozens are reported missing after sudden heavy rain-triggered floods in Indian Kashmir's Kishtwar district on Thursday. The disaster struck Chasoti town at 11:30 a.m. local time, a stopover on the Machail Mata temple pilgrimage route, washing away a community kitchen and a security post. और 100 से ऊपर जो हैं जख्मी जिनको हमने शिफ्ट किया है, तो रेस्क्यू चल ही रहा है, तो अब क्लियर पिक्चर बता नहीं सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्योंकि मिसिंग भी हैं। मैं तो गाड़ी के नीचे फंस गई थी। मैंने तो होप खो दी थी कि नहीं, मैं नहीं हो पाएगा। फिर मेरे को मेरे फादर दिखे तो फिर मैं वहाँ से थोड़ा हिम्मत करके निकली। जब तक मैं निकली तो मेरे मम्मा जो हैं वो बिजली के खंभे के नीचे थे, उनके ऊपर और बहुत लोग थे। तो मैं तो जैसे तैसे करके निकल गई, मम्मा ज़्यादा इंजर्ड हो गए। Multiple pilgrims are feared to have been caught in the disaster, prompting authorities to suspend the Machail Yatra pilgrimage to the high-altitude Himalayan shrine of Machail Mata. Additional rescue teams, along with Army and Air Force units, have been deployed, and search and rescue operations are currently underway.